Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. This is Dr. Sara Khawar, Assistant Professor at Faculty of Business and Management, Information Technology, University, Lahore, Pakistan. I welcome you all to this webinar that we have arranged as a celebration of Global Entrepreneurship Week that is happening all over the world. Today, we have a very dynamic entrepreneur with us who has this aim of revolutionizing industries like event management, arts and crafts, around the themes of agriculture. And he is very passionate about coming up with product ideas that are technology oriented. So we have Hamid Saeed with us, who is the founding CEO of Shahruh Technologies Private Limited and currently is working as a director. So we welcome you, Hamid. Thank you so much for joining us today. Thank you very much for having me today with you. And I'm really glad to be at this platform of Information Technology University. Looking forward to a healthy conversation. Thank you. Thank you so much. So Hamid, we'll start off with your journey as an entrepreneur. So where did Shahruh's idea come from? Okay, so the story is very interesting. I actually started my journey as a public speaking professional. So I love to speak to people and, to train people and how to speak in front of people. So यहाँ मुझे बहुत शौक था कि लोग मुझे सुने, बट एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि शुरू में ऑब्वियसली कुछ चीजें होती हैं. So then I met my mentor and he told me कि लोगों को आपको सुनने से पहले आपको लोगों को सुनना पड़ेगा. So I said, okay, so that's another dimension. So I started listening to people, different mentors, different entrepreneurs. So ये सब चलता रहा. फिर उन सब लोगों को देखते देखते एक अर्ज डेवलप हुआ कि if they can do, मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर ये कर सकते हैं तो obviously I can do it myself. So I graduated from Punjab University in 2016. I started a job just like other graduates. एक नॉर्मल एक कल्चर पाया जाता है कि आप डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं फौरन से जॉब पे चले जाएं. So it was a good corporate job. So having a very handsome salary as well. So I started as a software engineer in one of leading brands in Pakistan. But I was fortunate enough to have a very good CEO as my boss. So अक्सर accomplished entrepreneurs ये भी कहते हैं कि at your first job, don't choose your job, choose a very good boss. So I was fortunate enough to have a very good boss. I would like to name him as well. Munis Rahman was my first boss and my first mentor as well. So Munis really guided me in the entrepreneurship things and all those things, and he really inspired me to become an entrepreneur. तो यहाँ से तो सिर्फ अभी शौक बेदार हुआ कि entrepreneur बनना है. अब entrepreneur बन के करना क्या है, स्टार्टअप आइडिया क्या होगा, क्यों होगा, वो कैसे होगा, ये सारी बातें अभी भी जवाब तलब थी. तो ये तो अभी तक तो इतना जर्नी है कि डिसाइड हो गया कि entrepreneur बनना है. अच्छा, अब करना क्या है, करना क्या में I was looking at Rosie, I was looking at Zameen, I was looking at Daraz. कि marketplaces पाकिस्तान में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं. अगर आप e-commerce साइट पे जाएं तो Daraz is doing really great. अगर real estate में आ जाएं so Zameen is there. Job site पे आ जाएं so Rosie is there. So I came up with an idea of event marketplace. Events के लिए हमारे पास अभी तक पाकिस्तान में कोई marketplace नहीं पाई जाती. So I thought कि ठीक है जी हम event marketplace बनाएंगे. तो यहाँ पे नाम की हिस्ट्री भी थोड़ी मज़ेदार है कि आई वाज लाइक कि ओके इट विल बी अ मार्केटप्लेस और इस मार्केटप्लेस का जो लोगो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि देयर इज अ स्पीकर जिसमें से कुछ साउंड वेव्स एमिट हो रही हैं और वो किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी कर रहा है. सो हमने एक ऐसा लोगो बनाया जो कि खुद ही एस शेप में बन गया और उसके ऊपर साउंड वेव्स जा रही हैं. So we were like, okay, fine. So our name had to start from S. So from S, I was writing a novel that time, and I was reading a novel in parallel. So there was a name in Turkish called Shahruh. So I just got stick with that name. कि ये name बहुत मजे का है. अब कंपनी का नाम होगा Shahruh. कंपनी काम करेगी event marketplace पे. तो चीजें eventually decide होती रही. 2016 में ये decide हुआ कि entrepreneur बनना है. 2017 में ये डिसाइड हुआ कि जो एंटरप्रेन्योर बनना है वो इवेंट की मार्केटप्लेस बनानी है और उसका नाम शाहरुख होगा. So that's how my journey actually started. Obviously it wasn't easy for me back in 2017. Obviously the family things and the financial pressure and all those things were there जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के साथ होती हैं. So they were there with me as well. लेकिन I was fortunate enough that I had undue support from my father. He just said me कि बेटा आप करो, I'll be there for
everything you will be needing. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा जर्नी रहा कि उनकी तरफ से अनड्यू सपोर्ट मिलती रही और मेरी तरफ से कभी उस सपोर्ट को क्लेम नहीं किया गया. So it was a very good situation for both of us. So that's how my journey started. And there are so many other things that I'll be telling in response to your questions. Right. Thank you. Thank you so much. It's a very good start, Hamid. So I will just go deeper into this, that what exactly, how are you revolutionizing the event management? What was the industry at that time when you started? And what does your product actually provide in that industry? Okay, so two main elements, those were missing in 2017 when we started Shahruh Technologies. The first one was there wasn't a culture of collaboration and partnership. So Shahruh primarily introduced that culture of collaboration and having partnerships, not only among event managers, but event organizers, event venue holders, even service providers. So we brought all of them under one umbrella of Shahruh, and we promoted a culture of collaboration among those. The second thing was there wasn't any particular or considerable participation from females in this industry. All the workforce was coming from the male side. And people used to call it man force, not the workforce. So we really had some issue with this term. It's not man force, it's workforce. So we have to change it. So we really worked hard to change this thing. We had female co-founders in Shahruh to prove the claim. We had female team members within our team, within our management team, within our intern teams and all that. And then we came back to industry and then told them कि अगर आप एक खातून को लेना भी चाह रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि जो उनके कुछ इश्यूज होते हैं, ओके फाइन, आई एडमिट इश्यूज होते होंगे, वो तो हजरात के साथ भी होते हैं, तो उन इश्यूज को एड्रेस किसने करना है? हम नहीं करना है ना. सो जस्ट बाय सेइंग कि देयर आर इश्यूज, आप उस चीज को एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स को 52% आपकी पॉपुलेशन का पार्ट है, आप उसको साइड पे नहीं कर सकते. यू हैव टू एड्रेस दोस इश्यूज. सो उसमें जो फर्स्ट चीज हमने की जो कि बहुत सिंपल थी, और करने के बाद हमें खुद भी एहसास हुआ और जिन लोगों ने की उन्हें भी एहसास हुआ कि इट वाज दिस सिंपल. तो वो ये था कि हमारी अक्सर जो फीमेल वर्कफोर्स थी, दे हैड इश्यूज इन डूइंग इवेंट्स ड्यूरिंग नाइट टाइम. ये होता था कि अब चूंकि 11 बज गए हैं तो घर जाना है, अब इशू है, 11 बजे के बाद स्टे नहीं कर सकते, इवेंट तो सारी रात चलता रहेगा. इट कैन बी अ कॉर्पोरेट इवेंट और इट कैन बी अ पार्टी इवेंट, बोथ सॉर्ट ऑफ इवेंट्स. तो इसमें हमने उनको आपस में कोलैबोरेट करवाया इस तरह से कि फीमेल इवेंट मैनेजर कैन टेक ऑर्डर ऑफ एन इवेंट और वो उसको किसी काउंटर पार्ट के साथ मिल के इस तरह से कर सकती हैं कि दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो संभाल लें और रात की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके जो पार्टनर हैं वो संभाल लें. सो इट वाज दिस सिंपल. लेकिन इसको करके दिखाना पड़ा. जब हमने करके दिखा दिया फिर लोगों को समझ आई कि ओ ये तो इतना आसान था, तुमने इसको ऐसे ही बनाया हुआ था कि नहीं कर नहीं पाएंगी, इनसे हो नहीं पाएगा. So then alhamdulillah we organize very good events following this technique. और फिर इसके बाद हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं रही, लोगों को समझ आ गई कि जो ये कह रहे हैं बहुत आसान चीज है और वो हो जाता है. Just need to come out of your comfort zone और आपको बताना है कि आप इस जोन में रह के काम कर सकते हैं और आप पार्टनर इस जोन में रह के काम कर सकते हैं. Then we actually started doing corporate events. तो corporate events में होता ये है कि आपके इवेंट को कवरेज अच्छी खासी मिल जाती है. आप एक इवेंट करते हैं और उस इवेंट को आप सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अच्छे से मार्केट कर देते हैं और वो एक इवेंट आपके मैसेज को बल्क में आगे पहुंचाने में मददगार साबित होता है. So corporate event में we had Pasha with us, Pakistan Author Affairs Association. We were fortunate enough to work with Ministry of IT on their initiative of DigiSkills. So DigiSkills really has impacted millions of people in Pakistan where they did. So yeah, DigiSkills is on credit of Shahruh. So उसमें we were peer partner with them. So DigiSkills के केस में जो हमारा फीमेल वर्कफोर्स वाला क्लेम था ये बहुत अच्छे से साबित हुआ कि ना सिर्फ पीआर में जिन लोगों ने पीआर किया उसमें फीमेल वर्कफोर्स की बहुत बड़ी तादाद थी, बल्कि जिन लोगों ने एनरोल किया फॉर डिजिटल फ्रीलांसिंग उनमें भी 50 to 60% लोग फीमेल्स हैं. तो ये चीज, तो ये दो मेन चीजें थी जो कि 2017 में इस इकोस्फीयर में नहीं थी और 2020 में हैं. और I take a little bit pride in saying that Shahruh is responsible for this change.
That's wonderful. That's really great. And I think one of the values that entrepreneurship actually creates in a society is this power of inclusion and connecting those kind of elements in a society Right. that don't exist. So I think Shahruh has is a very good example of connecting all those dots and creating that impact. So let's move on towards the team development. So once you had the idea, you had the resources, so your father was very supportive of your venture, and then you actually decided on different partners to actually partner with you. So how did you actually come up with a good team? Because coming up with a team is a very crucial step for an entrepreneur whenever they are starting up. So how did Shahruh actually do the team building? Right. Okay, so we started with a co-founding team of 6 members, right? So it was a huge team at that time, and people were telling me कि इतनी बड़ी टीम की क्या जरूरत है, ये आप कर क्या रहे हैं, 3-4 co-founder होते हैं, ये आप 6 लोग रख लिए हैं, तो क्या जरूरत है? But I knew at that time कि eventually ये चीज एक umbrella की तरह इसको आगे जाना है, so we need even more co-founders and more people on key positions. मैं अभी भी 6 पे भी satisfied नहीं हूँ, मुझे और भी चाहिए, तो ये एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो आज सुन रहे हैं, they want to join Shahruh, so they are more than welcome. So anyways, coming back to point, we started from 6 team members, all of those were co-founders, and then we started having employees on very minimal wages. We told them the idea of Shahruh, and we told them that when it will be successful, so they will be having a considerable share and all those things. So we were fortunate enough to have people from friends and family within Shahruh. So we didn't compromise on merit. Merit was there, but the good luck was कि वो merit friends और family में ही हमें मिल रहा था. Still, I have a few people working at Shahruh who belongs to my own family, like my elder brother, my sister, my cousins, you know, daughters and sons of my father's friends, and the very close circle of mine. So a few class fellows of mine at PU and now here at IIT are working with Shahruh. Yeah. So that's how we started. हमने मतलब जो बिल्कुल क्लोज लोग हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने उनके साथ स्टार्ट किया. इसमें वो ये चाहता है कि आपको फिर बहुत ज्यादा जज नहीं करना पड़ता, आप ऑलरेडी जानते हैं उन लोगों को, उनके साथ टाइम स्पेंड किया होता है. So इन 6 लोगों में जो शाहरुख की को-फाउंडिंग टीम थी, इनके साथ कुछ इस तरह से we started an NGO with the name of Muhibani Mohammed. So it's a quite old thing now. तो ये वही लोग थे जिन्होंने उस NGO में भी हमारे साथ काम किया था. So when we just sat down to build Shahruh, तो हमने कहा कि ठीक है, वो लोग जो 5 साल से हमारे साथ ये काम कर रहे हैं and they have that impact thing in mind कि ठीक है, सिर्फ पैसे नहीं बनाने, entrepreneurship is not only about making money, it's about making impact as well. So we onboarded all those people. Like we have a person from technology background, a person from finance background, a person from business development background, a person from operations background, and a person from research background, and myself coming from almost all of these backgrounds. So I became the CEO. I became the CEO of the organization. I'm not the chief executive officer of Shahruh. I used to call myself chief everything officer of Shahruh. Right? So in our case, you mean chief everything officer, that you have to deal with almost all the departments. So yeah, the lady Mariam Qureshi, she's dealing the research thing. She comes from research background. Saad Wasim is dealing technology thing. Junaid Iftikhar is dealing the business development thing. Majid Qadir is dealing the operations thing. तो इन सब लोगों की स्पेशलिटी यही थी, इनकी फील्ड ऑफ स्टडी भी यही थी, तो इनको यही चीजें असाइन की गई और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आए. क्योंकक्ि जब आप एक बंदे को उसकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग ही रोल असाइन करते हैं तो वो काफी कंफर्टेबल फील करता है उस चीज में. So 3 years later अब हम लोग जब टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारे अभी भी डिपार्टमेंट्स यही हैं, इन्हीं डिपार्टमेंट्स में नए लोग ऐड हो रहे हैं. So that's how we. Yes, that's really great. So coming up with the team, yes, very important, and you are very fortunate to find them in your inner circle. But I'm totally agreeing with you that you need to have that level of trust and that level of understanding that they would be able to deliver what you are expecting from them. So whenever you are making a team for an entrepreneurial venture, that is the main aim
for an entrepreneur. So yes, so coming up with the team, and so one of the things that entrepreneurs actually struggle is letting go of things, delegating. That is one of the key challenges that entrepreneurs face, because yes, as you told me that you were chief of everything in the organization. So how can you actually train yourself being an entrepreneur to learn yourself to delegate? So how did you learn that? Okay, in 2017 again, Shahruh was a part of an incubator called iCube. So there we got a mentor. His name is Ziad Khan. I'm really grateful कि उन्होंने मैं उस वक्त में वो सारी चीजें सिखाई. So the only thing जो ज़ियाद खान साहब की मुझे आज तक याद है, he used to tell me, Hamid, learn to say no. If you are good at saying no ना, तो you are a very good entrepreneur. And I was like, कि sir, entrepreneurs तो हर opportunity को welcome करते हैं. So you are telling me learn to say no, तो ये तो एक paradox बन जाएगा. ये समझ नहीं आती थी at that time ना. But in 2018, when opportunities really start coming as like कि बारिश हो रही है और कुछ shower है, वो मुसलसल चल रहा है, opportunities आ रही हैं. So at that time, उनकी वो advice मुझे बहुत जोर से याद आई कि yes, you have to say no at some places. और उसमें फिर आपको pick and choose करना पड़ता है कि ठीक है यार, ये जो चीज़ है ये long run में हमारे venture के लिए बेहतर है. In 2018, we stopped calling Shahruh a startup. We started calling an organization. So we started behaving like an organization. फिर हमारा जो startup founder वाला वो एक phase था, वो हमने side पे कर दिया. हमने कहा अभी एक organization है, now we have to behave like executives or directors, you should say. So वो इस तरह से था. So there were so many opportunities जो हमने let go की, लेकिन उनमें से कोई भी opportunity ऐसी नहीं है जिस पे अभी तक हमें कोई regret हो. तो वो बड़ी वेल कैलकुलेटेड डिसीजन होता है कि ठीक है, आपने कैलकुलेट किया कि इसकी वेटेज ज्यादा है, इसकी वेटेज कम है. सो आई कम फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, सो देयर आर डाइसेक्ट्रा एल्गोरिथम्स एंड स्केचिंग थिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स. सो वी अप्लाई ऑल दोस थिंग्स. सो अप्लाई करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो ये ले लेते हैं, और ये शॉर्टेस्ट है और इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, सो डू दिस. ये बड़ा यूनिक सी चीज़ है. नॉर्मली स्टार्टअप्स इसको इस तरह से करते नहीं है, कर पाते भी नहीं है. बट एज आई कम फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, माय को-फाउंडर शाहरुह भी कम फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड. सो व्हेनेवर वी टू गाइज आर सिटिंग टुगेदर एंड मेकिंग द स्ट्रेटजी, तो हमारी स्ट्रेटजी पे कंप्यूटर साइंस को यूज करते हुए बन रही होती है. तो यस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि बहुत सारा सोचना पड़ता है. एंड यस, एट द एंड ऑफ डे वी हैव टू से नो टू फ्यू थिंग्स. Yeah, that's leverage other things at the end. Absolutely. So talking about opportunities, so you started off with event management, but you actually went into printing as well. Then you have agriculture in your umbrella. Then you have arts and crafts in your umbrella. So how did like these different kind of things actually get connected to this whole Shahruh Technologies umbrella? Okay, so first of all, I'm really thankful कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है. ये बहुत मजे का क्वेश्चन है, and I was hoping कि आप ये मेरे से पूछें. So इसमें it's like कि we named it Shahruh Technologies. We never named it like Shahruh Event Technologies. Never ever. So in Shahruh Technologies, we have to deal with different sort of technologies. So इसमें हुआ कुछ इस तरह से कि we launched Shahruh. तो इवेंट्स होते थे, सब कुछ होता था. तो हमें इवेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेरीज आने लग गई कि आप ये इवेंट करवा दें, ये कॉर्पोरेट इवेंट है, इस तरह से. शाहरुख को वो जो फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ जिसमें से हमने कुछ रेवेन्यू मेक किया, एंटरप्रेन्योर्स को अपनी पहली कमाई याद रहती है. तो वो जो हमारी पहली कमाई थी, दैट वाज फ्रॉम अ प्रिंटिंग ऑर्डर. कि पीसी में एक इवेंट है, पीसी लाहौर में, और एसडीपीआई जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग इंस्टीट्यूट, इनका इवेंट है. और उस इवेंट के लिए आपने बाकी सब तो कुछ करना ही करना है, इवेंट मैनेज करना है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट यू हैव टू प्रिंट थिंग्स एज वेल. इवेंट का जो बैकड्रॉप होगा वो भी आप प्रिंट करेंगे, इवेंट के फ्लायर्स प्रिंट करेंगे, इवेंट के स्टैंडीज प्रिंट करेंगे, और इस तरह से और जो सारी चीजें इवेंट पे प्रिंटिंग की चीजें चाहिए होती हैं वो आप करेंगे. सो वी सिंपली सेड के नहीं, हम तो ये नहीं करते. वी वर इन दैट जोन, लर्न टू से नो जोन. तो दे सेड हम नहीं जानते, हमने आपको कह दिया, अब आपको करना है. ओके, ऐसा है तो कर देते हैं. तो हमने फर्स्टली क्या किया कि हमने सिंपली इस चीज को आउटसोर्स कर दिया कि ठीक है, देयर इज अ मार्केट. तो मार्केट में गए, वहाँ से वेंडर सेलेक्ट किए, उनको कहा ये काम करना, उन्होंने कर दिया. तो वेंडर्स को काम करवा के हमने दे दिया. उसके बाद वेंडर्स की हमें कॉल्स आने लग गई कि सर कोई और नया
नया काम नहीं आया आपके पास? And I was like, okay, that was a one-time thing. Why you guys are calling me again and asking me कि कोई नया काम नहीं आया? लेकिन वो कॉल्स इतनी ज़्यादा थी कि they really made me think कि नहीं भाई, इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी उम्मीद लग गई है ना हमसे। ये समझते हैं कि ये तो हमारे पास अब आते ही रहेंगे और ये तो STPI के साथ काम कर चुके हैं, तो बाकी जो relatively smaller organizations हैं वो तो इनके लिए मसले कोई नहीं होगा। So from there, we developed an idea and we developed a separate team and we named it as printable.pk. और हमने हमारा जो जितना भी प्रिंटिंग का सेक्टर है उसको हमने सेपरेट कर दिया, using the same sharing economy model and the marketplace terminologies that we are using on Shahruh. कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं था, सब चीजें वैसे ही थी, सिर्फ उसी की एक कॉपी थी, उसका एक रेप्लिका था जो कि इवेंट्स में डील नहीं कर रहा था बल्कि प्रिंटिंग में डील कर रहा था। तो हम अपने मेन आइडिया से हटे नहीं। I have to explain it sometime to people. People call it like कि आपने pivot कर लिया, आप अपने मेन आइडिया से डेविएट हो गए। नो, हम लोग डेविएट नहीं हो गए, हम अपने मेन आइडिया पे ही शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल और मार्केटप्लेस और कम्युनिटी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। ये चीज कांस्टेंट थी। The only thing that got changed was the industry, कि अब हम इवेंट इंडस्ट्री के साथ साथ प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी आ गए। तो frankly speaking, मुझे खुद को शायद प्रिंटिंग इंडस्ट्री की ABC भी नहीं आती। I'm saying it on a renowned media thing कि मुझे खुद को being a director of Shahruh Technologies, printable is part of that, मुझे खुद को नहीं पता कि वहाँ क्या चल रहा है। But we have enabled those vendors who are dealing in printing industry to get maximum orders, to get maximum reach, maximum orders and all those things. तो वो marketplace है, community है, वहाँ लोग आपस में डील कर रहे हैं। We don't really have any idea कि वहाँ चल क्या रहा है। वो आपस में डील कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को रेवेन्यू इंक्रीज करके दे रहे हैं, एक दूसरे की जिंदगी आसान कर रहे हैं। Especially in case of COVID, बड़ा मसला आया, event industry was about to crash. Then obviously फिर हम लोग बैठे, कुछ policies develop की, कुछ बड़े event organizers को engage किया। We are still working on that. तो शाहरुख का रोल ये है, एक कम्युनिटी बिल्डिंग की हमने, और वो कम्युनिटी अब खुद ऑपरेट कर रही है। As you just mentioned in start कि अब वो कम्युनिटी ऑटो पायलट पे लग गई है, कम्युनिटी खुद से ऑपरेट कर रही है, एक दूसरे के मसले खुद सॉल्व करती है without even reaching us. They reach Shahruh, but they don't reach us personally. So that's the point. They reach Shahruh every time, but they don't reach any of directors of Shahruh personally. तो ये था प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए। Then art and craft thing, art and craft में ये था कि हम लोग जब काम कर करके थक जाते हैं ना, वो एक ऐड आता होता था, मैं वो ऐड नहीं बताना चाह रहा कि काम 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 दिन रात करें हम काम, और जब काम से थक जाएं तो खूब कहते हैं। तो टीम शाहरुख हम लोग फिर जब हमें आराम करना होता है ना, तो हमारा आराम ये क्योंकि ऑल गाइस आर आर्ट लिटरेचर, हमें अच्छी लगती हैं वो चीज़ें, हम सब में ये चीज़ कॉमन है। तो हम क्या करते हैं कि हम शाहरुख ऑफिस में ही छोटी छोटी चीज़ों को खुद से क्राफ्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा आज ये बनाते हैं, अच्छा पेपर से फ्लावर बनाते हैं, अच्छा इनवाइट्स को जोड़ के कुछ रिपोर्ट टाइप बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी हॉबीज़ हैं हम सबकी। तो वो चीज़ हमें एक्साइट करती थी। तो हमने जो आर्ट एंड क्राफ्ट में टैप इन किया वो सिर्फ शौक में किया, हमारा उसको प्रॉपर वेंचर बनाने का शुरू में इरादा नहीं था। तो शौक में किया, शौक में जब करके देखा कुछ चीज़ें अच्छी बन गई। जब कुछ चीज़ें अच्छी बन गई हमने उनको ई-कॉमर्स में पुट कर दिया फॉर सेल, वो सेल हो गई। जब वो सेल हो गई तो देन वी गॉट एन आइडिया कि ओके ये भी एक काम करने वाला, ये तो अभी तक हम इग्नोर करते आ रहे थे। तो हम तो इसको सिर्फ एक पार्ट टाइम एक्टिविटी समझते थे, एक फन टाइम एक्टिविटी समझते थे, बट इट्स नॉट फन, इट्स अ प्रॉपर थिंग। So from there, the directors of Shahruh, we again sat down and we discussed the thing. Okay, why not the same sharing economy model and marketplace thing for art and craft as well? तो इसमें हमने दो चीज़ें की। हमने आर्ट एंड क्राफ्ट के एक्सक्लूसिव इवेंट्स कंडक्ट करवाए, जहां हमने एक्सक्लूसिवली भी सिर्फ आर्टिस्ट को ही बुलाया। पूरा जो इवेंट होता था वो एक आप कह लें एग्जीबिशन होती थी, एक्सपो होती थी, जिसमें सिर्फ आर्टिस्ट ही होते थे और उनसे लोग चीज़ें आके बाय करते थे और उनको पे करते थे। तो इस तरह से आर्टिस्ट की जिंदगी भी आसान, आर्टिस्ट हैप्पी है, उसको पैसे आ रहे हैं। बायर की जिंदगी आसान, बायर को एक ही छत तले बड़ी अच्छी वैरायटी मिल रही है, बहुत यूनिक चीज़ें मिल रही हैं, वो चीज़ें जो नॉर्मली कहीं से नहीं मिलती उसको वहाँ से मिल रही हैं। और हम हैप्पी दो चीज़ों की वजह से थे। एक हम ये इस वजह से हैप्पी थे कि हमें खुद को बहुत अच्छा लगता है ये सब करके, एज आई टोल्ड यू कि वो हमारी हॉबी थी। और सेकंड चीज़ वही कि इट वाज जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर अस।
So definitely startup go for revenue think, okay, fine, if something is generating a good revenue for you, so why not? And it is not colliding with any of your thing. Shall we organize event? Yeah, we do. So we just started organizing events for our artisans. Simple. No rocket science. Simple. तो उसको exclusive कर दिया for art and craft. So we named it fashiony.pk. Fashion wire. People call it fashion wire. So okay, fine. We call it fashiony because fashion is a term that means something fashionable. So yeah, fashion is something unique, something new. So art and craft we introduce is really unique, really new. So the first thing we introduced at Fashiony was quite a unique thing. I would love to talk about that if you allow Yeah, me. sure. Okay. So it was jewelry made of camel bone. तो ये एक बड़ी यूनिक चीज थी, इससे पहले हमारे यहाँ देखने में नहीं आई थी. हमारे यहाँ बॉन के बने हुए कुछ क्राफ्ट्स होते थे, लेकिन वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं थे, वो मार्केट में मिलते नहीं थे, और ज्वेलरी का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो वी कमिंग फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड और वेरी वेल अवेयर बैकग्राउंड, जहाँ हमारे पास यूट्यूब की एक्सेस भी है, हम लोग देखते हैं कि ग्लोबली क्या चल रहा है. तो आई सॉ डिफरेंट पीपल मेकिंग ऑल दोज डिजाइंस, एंड just one day I was sitting with my mom and I asked her, आप ये ज्वेलरी पहनते हैं इतनी महंगी, तो why don't you try some other material, like why only gold and silver and all those things? So she said कि बना के दे दो, पहन लेंगे. I said okay. So the only challenge is कि बना के दे दो. So we discussed it with our artists. तो they said okay, बन सकती है, कैमल बॉन की ज्वेलरी बिल्कुल बन सकती है. So we started making necklaces, bracelets, earrings and rings. आपको मेरे से बेहतर पता होगा क्योंकि वो आपका डिपार्टमेंट है. So we started making all those things. So we got a very good response कि जबरदस्त, लोगों ने बड़ा वार्म वेलकम किया उस चीज को कि जबरदस्त इस चीज की ज्वेलरी बन सकती है. People even started wearing it in their like wedding ceremonies, और जो बड़े वन टाइम इवेंट्स होते हैं, बड़े एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, वहां पे पहनना शुरू किया लोगों ने इस चीज को. तो ये जो आर्टिस्ट की कम्युनिटी थी जो कैमल बॉन पे काम कर रहे थे, ये बड़ी एक मिसेरेबल लाइफ जी रहे थे बिफोर फैशन, क्योंकि इनकी चीज़ों को ऑर्डर नहीं मिलता था, कोई खरीदता नहीं था, आउटसाइड पाकिस्तान इसकी कोई डिमांड नहीं थी. सो विद द एडवेंट ऑफ फैशन कमिंग इनटू प्ले, ये चीज़ें पाकिस्तान से बाहर भी जाना शुरू हुई ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, और विद इन पाकिस्तान डिफरेंट एग्जीबिशंस में इसकी सेल हुई, ऑनलाइन इसकी सेल अभी भी हो रही है. तो इसमें जो हमारी मोटिवेशन थी बीइंग मेंबर्स ऑफ शाहरुख टेक्नोलॉजीज, वो ये थी कि अब हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो खुश हैं. तो हमारी जो आप कह रहे हैं वाहिद कमाई है, वो आर्टिस्ट के चेहरे पे आई हुई स्माइल है. So that smile जो है वो हमारा मतलब दिन बना देती है. हम कहते हैं बस ठीक है, अब हम खुश हैं. क्या रेवेन्यूज आते हैं, वो सब भी आता है, those things are there, but the original thing is the smile on their faces. So that's how we tapped in the fashion thing. अब obviously उसमें वो camel bone से start किया, then we started adding different sort of jewelries, then we started adding bags, clothes. तो इस तरह से different चीजें आती हैं. फिर फैशनी में ही एक और डिपार्टमेंट हमने मजीद एक्सक्लूसिव कर दिया. उसको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब एक्सक्लूसिव होती जा रही हैं. तो उसमें हमने किड्स क्लोथिंग के लिए एक ब्रांड टोटली अलग कर दिया, एंड वी नेम्ड इट महरू. शाहरुख के वजन पे महरू. तो रिमेंग वर्ड्स. सो महरू इज एन अरेबिक टर्म एंड दैट मींस अ मून लाइक चाइल्ड और लाइक मून लाइक लेडी. सो महरू एक एक्सक्लूसिव ब्रांड है जो कि अब किड्स क्लोथिंग में डील कर रहा है. Not only kids clothing, but everything a kid need to become a star kid. So यहाँ मैं वो आपकी बात को दोबारा से सेकंड करना चाहूँगा कि शाहरुख एक अच्छा स्टार्टअप बन गया, एक अच्छी कंपनी बन गई. हमें यहाँ नहीं रुकना. हामिद सईद एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है, साथ वसीम तैमूर राशिद, ये लोग अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं. This is not the end of story. This is just the beginning of story. We have to create lot more leaders, we have to create lot more entrepreneurs, we have to facilitate lot more people. कि अगर हमारा ये जर्नी let's suppose 8 साल का था, तो उनका 8 साल का ना हो, उनका इससे थोड़ा कम हो, उनके लिए चीज़ें आसान हो, उन्हें चीज़ें प्रोवाइड की जाएं. So Mahru got launched, I guess, just few months ago, 2 or 3 months ago. Mahru got launched. But the PR that Mahru got is way more than Shahruh itself. So this is where you can relate कि वो जो बाद में आते हैं, नई नस्ल हमेशा पहली नस्ल से 2 कदम आगे होते हैं. बिल्कुल आगे होती है. तो ये एक हमारे पास एग्जांपल है.
So the agriculture thing, I'll be answering that in answer to some other question. So for now, बिल्कुल that's really interesting. Thank you so much, Hamid, because I think linking it up with different opportunities and trying to use technology as an underlying thing and connecting and sharing economy model, these are very novel kind of concepts, and I'm really glad that you came in and you shared your story, how you actually use those concepts in your daily lives and actually built and created value around this. So let's move on towards the agriculture side of things. So how technology can actually influence, because there's a lot of things that can happen in the agriculture space. So what Shahruh has been doing? Okay, so there was a challenge by UNDP Pakistan to solve the agriculture issues in Pakistan. So once again हम लोग बैठे हमने कहा अच्छा ठीक है बाकी सब तो कर लिया तो अब ये UNDP का भी एक चैलेंज है ये भी कह रहे हैं कि कुछ अच्छे माइंड्स इकट्ठे बैठे और कोई सोल्यूशन निकालें. So let's see कि हमारे पढ़े लिखे दिमाग इसमें कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. We have a team member Mariam Qureshi. She come up from biotechnology background. So we involved her, we involved the Information Technology University's class of Development Studies, MSc class को हमने involve किया उसमें. I would like to name those ladies, Amama Noor and Muniba Shabir. तो उनको हमने involve किया. Aisha Shafiq was there. तो ये वो लोग हैं जो environmental studies और biotechnology और इस तरह के background से आ रहे हैं. तो primarily इस चीज़ को जो agriculture में शायद ने tap in किया, इसको इन लोगों ने किया. मतलब हमने इनको सपोर्ट किया, हमने इनको फैसिलिटेट किया, एम्पावर किया, इनको स्टेज तक पहुंचाया. बट वहाँ जो भी परफॉर्म किया, जितना भी क्रेडिट है वो इन लेडीज को जाता है. ऑल क्रेडिट गोज टू दीज लेडीज. मैं इसमें से कोई भी क्रेडिट लेने के हक में नहीं हूँ. ओके फाइन, बीइंग डायरेक्टर ऑफ शाहरुख, ऑब्वियसली दैट क्रेडिट somehow comes to me, but yeah, the all credit goes to these ladies. They did a very good job. But they actually did. First thing they did was presenting a solution for locust attack. क्योंकि लोकस्ट अटैक की वजह से काफ़ी मसला था, एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे. And the second thing they did was once again introducing the sharing economy model and the easy access to markets for vegetables and food produced by agriculturists. तो इसमें इन्होंने ये किया कि लोकस्ट अटैक के लिए what they did was breeding of locust eating birds. So there is a bird, I'm just trying to recall the name, we used to call it tilor. So tilor यहाँ हमारे इस कल्चर में पाया जाता था, लेकिन हमारे कुछ मेहरबान अरबी शहजादे हैं तो वो पाकिस्तान में आके ना इनका शिकार कर लेते हैं. तो जब उसका शिकार कर लेते हैं तो अब लोकस्ट को खाने वाला कोई नहीं बचा. जब लोकस्ट को खाने वाला कोई नहीं बचा तो वो फिर एक अटैक के फॉर्म में हमारी फसलें खा जाता है. तो बैकग्राउंड स्टोरी ये थी. हमने थोड़ा रिसर्च किया इस पे, हम इस बैकग्राउंड स्टोरी तक पहुंचे. फिर हमने चाइना का मॉडल स्टडी किया. तो बट चाइना डिड वाज कि चाइना ने इन्हीं बर्ड्स को ब्रीड किया खुद से, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में भी और नेचुरल एनवायरनमेंट में भी. तो वी सेड ओके फाइन, वी विल डू द सेम. हम एक छोटी सी फैसिलिटी बनाएंगे और छोटी सी फैसिलिटी में हम ये जो हमारा बर्ड है रोजी स्टार्लिंग, इसको हम ब्रीड करेंगे और हम इसके जितने भी पेयर्स ब्रीड करवा पाए तो वो हम ब्रीड करके उसको हम टेस्ट करेंगे कि वो लोकस्ट ईट करता है या नहीं करता. तो वी परफॉर्म दैट टेस्ट. तो उसने लोकस्ट ईट किया. तो फिर हमने यही सेम सोल्यूशन अपने सारे फार्मर्स को मफाद आमा के लिए हमने इसको पब्लिक कर दिया कि जिसने भी अब करना है वो ये कर ले. क्योंकि दैट्स द अल्टीमेट सोल्यूशन. आप वो गैसेस यूज करेंगे या आप केमिकल्स यूज करेंगे या व्हाटएवर स्प्रे यूज करेंगे, एक तो वो आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा करेगा, सेकेंड वो नेचुरल नहीं है, थर्डली वो आपके हेल्थ हैजर्ड्स में बड़ा असरअंदाज होता है. तो ये एक टोटली नेचुरल सोल्यूशन था और बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव और सादा सा सोल्यूशन था. सो शाहरुख इज फेमस फॉर डूइंग सादा थिंग्स जो लोगों को वैसे समझ नहीं आती, फिर हम करके दिखा देते हैं तो वहाँ कहती है ओ ये तो बड़ा सादा सा था. The only difference is कि वो सादा चीजें एक दफा करके दिखानी पड़ती हैं. So we named it Hatch. Hatch नाम रखा हमने, ये जो हमारा एग्रीकल्चर इंटरवेंशन था. तो हैच ने पहला काम तो ये किया, इसी काम की बेस पे they won the UNDP hackathon. First they got first prize and then they pitched the same idea to Ignite National Technology Fund. तो Ignite said कि okay fine, the idea is very good, इसकी feasibility भी आपने करके दिखा दी, सब कुछ करके दिखा दिया. So then Ignite offered them seed money. तो वो seed money के साथ फिर उन्होंने इसको थोड़ा स्केल किया, फिर आगे उसको करके दिखाया.
और उसी स्केल अप का पार्ट था कि ठीक है, अब आपके चूंकि फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ गई है, तो लोकस्ट टैक्स से तो आपने उन्हें छुटकारा दिला दिया, अब वो अपनी मजीद डिमांड्स लेके आ गए कि अच्छा जी लोकस्ट टैक्स से तो आपने छुटकारा दिलवा दिया, लेकिन ये जो इंसानों की फॉर्म में लोकस्ट हैं जो हमें खा रहे हैं, इनका भी कुछ करें। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मैं बस इसको इसी तरह से कह सकते हैं अभी हम। तो वो जो इंसानों की फॉर्म में लोकस्ट हैं वो खा रहे हैं, उनका हम बस यही कर सकते थे कि हमने कुछ कोशिश की कि इजी एक्सेस दी जाए फार्मर को मार्केट की, क्योंकि वो जो दरमियान में लोग हैं, मिडल मैन हैं, वो एक बहुत बड़ा चंक ले जाते हैं एंड दे रियली डू नथिंग, कुछ भी नहीं करते वो। तो फार्मर जो एक्चुअल हकदार है उसको भी नहीं मिलता और कंज्यूमर के लिए भी प्राइस बढ़ जाती है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो कि शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल को ही यूज़ कर रही है। देयर इज एन उबर लाइक एप्लीकेशन जो कि ट्रैक कर लेती है कि अभी फार्मर ने यहाँ से डिलीवर कर दिया है, रास्ते में पहुँच गया है, चनी मार्केट में पहुँच गया है, चनी मार्केट में इतने दिन हो गए हैं, तो वो ट्रैक कर रहा होता है उन सब चीज़ों को। सो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वंस अगेन, सो द सिंपल थिंग। और उसमें फिर देन द अदर थिंग वाज द शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल विद इन फार्मर्स। अगर एक बिग फार्मर है, लैंडलॉर्ड है, उसके पास ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, so he or she can share those tools and machine with small farmers, and the farmer can charge for it. तो मैं अगर स्मॉल फार्मर हूँ, मेरे पास थ्रेशर नहीं है, हार्वेस्टर नहीं है, लेकिन मुझे अगर 20-25 हज़ार में मिल सकता है, so why not? I go for crops, so I will go for cash crops, so cash crops मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो सारे टूल्स हैं। So these were few things जो शाहरुख ने की एग्रीकल्चर सेक्टर में। अभी भी हम लोग इनको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हम उनको मजीद स्केल कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। द फ्यूचर ऑफ दिस थिंग, द लेडीज ऑफ हैज जो इस आइडिया को जिन्होंने परसू किया, आई गेस वो डिसाइड करेंगी कि उन्होंने इसको मजीद आगे किस तरह से लेके जाना है। लेकिन इस चीज़ की बेस पे ऑब्वियसली हमारा एक होराइजन काफ़ी ब्रॉड हो गया। हम यूनिटी के साथ भी, फिर एसटीजी टेक लैब के साथ आईटीयू में हमने काम किया इसी मुनासबत से। देन एफएओ जो है यूएन का आई गेस चैप्टर है, उसके साथ हमने काम किया, तो एक होराइजन डेफिनेटली ब्रॉड हुआ। तो अब इन सब चीज़ों को अगर हम एंड में कंक्लूड करते हैं कि एग्रीकल्चर हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, प्रिंटिंग हो गया, इवेंट हो गया, ये सब कुछ तो हो गया। तो इसके बाद हम लोग अभी तक 2017 टू 2020 थोड़ा बैकग्राउंड में रह के काम कर रहे थे। वी यूज्ड टू कॉल इट पंजाबी में ना सिर सुट के काम करना। तो यही हमें सिखाया गया था, यही हमें बताया गया था कि बेटा वो शो ऑफ नहीं करना, बस सिंपल सिंपल काम करना है और बस अपनी धुन में मगन रहना है एंड ऑल दोज थिंग। बट 2020 में भी पेंडेमिक आ गया और कुछ चीज़ें स्लो डाउन हुई, तो हम फारिग बैठे थे, हमने कहा कि अच्छा चलिए अब ये चीज़ें तो कर ली हैं, तो क्यों ना पहले इनको ये आवाम को बता दिया जाए कि ये तो हो गई हैं, कुछ तो करना था ना, जरा फारिग बैठे हुए थे। तो देन वी स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग सेशंस के जिसमें हमने हमको ये चीज़ वेरी फर्स्ट टाइम बताना शुरू की कि शाहरुख टेक्नोलॉजीज ये सब कर रहा है। बिफोर दैट हम लोग नहीं जाते थे, हम किसी सेशन में भी नहीं जाते थे, किसी ऑनलाइन टॉक में भी नहीं जाते थे, इनवाइट आता भी था तो सद शुक्रिया रिफ्यूज़ कर देते थे कि नहीं अभी काम करना है, काम करना है, काम करना है। तो नाउ आफ्टर 4 years वी फील लाइक कि अल्हम्दुलिल्लाह अब काम जो है वो इस हद तक हो गया है कि हम थोड़ा सा बता सकते हैं। वी आर रजिस्टर्ड एंटिटी, तो डेफिनेटली हम बता भी सकते हैं। तो व्हेन वी स्टार्टेड टेलिंग पीपल द स्टोरी ऑफ शाहरुख टेक्नोलॉजीज, सो वी वर नॉट अवेयर कि इसको इतना वार्म वेलकम मिलेगा। वी वर लाइक कि ठीक है, कुछ लोग लाइक करेंगे, कुछ फिर भी क्वेश्चन करेंगे, तो लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वार्म वेलकम मिला, इसको बड़ी अप्रिसिएशन मिली और हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। सो द फर्स्ट थिंग वी गॉट वाज इनविटेशन फ्रॉम सिलिकॉन वैली। They declared us as a high impact entrepreneur in the Asian region, and they invited us to come to Silicon Valley and set up our business there, and you know all those things. So that invite is still in Shahruh email box. So we haven't accepted it yet because primarily we want to remain in Pakistan and we want to keep operating from here because the problems are here. We just go to Silicon Valley and started solving problems that never exist. That's not the thing that Shahruh intend to do. We are here to solve the real problems. So that was the first thing. Second thing, we got invitation from Turkey. They're also willing to collaborate with Shahruh and invest in Shahruh and all those things. So Alhamdulillah, we got that offer as well. The third thing was
we started working with Ministry for Startups of South Korea. So South Korea have a dedicated ministry for startups, and they are developing policies and different things for startups. So when they saw the portfolio of Shahruh, that Shahruh is doing working in diverse fields, so they onboarded us as a, you can say, mentor maybe, कि आप आए और आप हमारे स्टार्टअप्स को मेंटोर करें कि एक ही टाइम में एक स्टार्टअप या एक कंपनी इतनी डाइवर्स फील्ड में भी काम कर सकती है. तो वो चीज़ भी अभी कंटिन्यू है, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है. बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर नॉट इवन प्लानिंग टू गो देयर. अगर एक चीज़ अच्छे से ऑनलाइन चल सकती है तो उसको फिर ऑनलाइन ही चलना चाहिए. तो ये इस तरह से उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं. और द लास्ट थिंग वी रिसेंटली गॉट वाज एपिक बिजनेस अवार्ड. तो एपिक बिजनेस अवार्ड इज यूके बेस्ड अवार्ड फ्रॉम आई गेस द रॉयल फैमिली ऑफ यूके. तो दे डिक्लेयर शाहरुह एज मोस्ट इनोवेटिव business solution of the year 2020. So alhamdulillah, all those things are on Shahruh panel. So these are few feathers in Shahruh cap. So we are really grateful to people supporting us back then. So that's all because of support of people. Yep. Absolutely. Thank you. I think congratulations for all of the achievements. And yes, you have made Pakistan proud and represented Pakistan on different forums. And we are very proud of your achievements. I'm really happy that you agreed to actually come on board and actually share that wisdom that you have gained from all that experience. So hats off to you. Yes, you have actually given me some indications that where you are headed and what are the future plans of Shahruh. But let's take a step back and see the sharing model, that the sharing economy model that you guys have been following, and you have applied it successfully into different industries and different sectors. So where do you think are the opportunities right now? Which sectors would you highlight? Because in your opinion, are there any problem areas in different sectors that can be solved with the sharing model? Okay, so just today I was interviewing a guy who is dealing in travel industry. So he was telling me all those things, and I was like, why don't you just adopt the sharing economy model? And he told me that, yeah, there are giants like, you know, the names Uber, Careem, Airlift, Bikeya, all these guys are doing these things. But the idea is different. No, हमारे यहाँ अभी जो travel industry है उसको सिर्फ और सिर्फ commute के साथ मैप किया जाता है. Traveling is not only commute. Traveling is tourism as well. अगर एक चीज tourism है वो भी traveling industry का part है. और हमारे यहाँ tourism का एक अच्छा खासा scope है. पाकिस्तान एक बड़ी जबरदस्त आपकी not only wedding destination but एक generic destination भी. I guess in 2020 Pakistan got declared as one of finest tourist destinations. So yeah, there is a huge potential in Pakistan कि अगर आप इसमें भी इसी sharing economy model को apply करें, so you can do wonders. यहाँ थोड़ा सा issue आ जाता है, लेकिन वो भी हम में से ही किसी को करना पड़ेगा, and that's why I opted public policy. तो वो ये है कि पाकिस्तान की public policy sometimes allow नहीं करती इस तरह की चीजें. कि अगर आपने किसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना है, कोई फॉरेन गेस्ट इनवाइट करने हैं, मे बी आई वांट टू इनवाइट हिलरी क्लिंटन, लाइक आई एम रियली बिग फैन ऑफ हर, तो आई वांट टू इनवाइट हर टू सम ऑफ शाहरुह इवेंट्स, तो बट आई कैन नॉट because of the policy issues here in Pakistan, that you cannot invite some former first lady or you know president of some country here in Pakistan, commercial things, but in India you can do that. So there is a very famous wedding of, I guess, Ambani's daughter where Henry was there. Right. So we need to address those things on policy level. There are gaps in public policy. जो startups हैं उनको ये करना चाहिए कि वो एटलीस्ट अपने एंड पे काम स्टार्ट करें. क्योंकि इसी तरह ये टू वे प्रोसेस है. समटाइम पॉलिसी बनती है, फिर स्टार्टअप्स एम्पावर होते हैं, और समटाइम स्टार्टअप्स इतने एम्पावर हो जाते हैं कि वो पॉलिसी को चैलेंज कर देते हैं कि भाई हम बन गए हैं, अब हमारे लिए पॉलिसी बननी चाहिए. तो ये दोनों तरफ से ही करना पड़ेगा. पाकिस्तान में भी टूरिज्म के हवाले से there is a huge potential. At Shahruh, what we are doing, we are facilitating destination weddings. लेकिन उसमें क्या है कि मोस्टली ये आउटगोइंग है. पाकिस्तानी लोग डिफरेंट कंट्रीज में जाके डेस्टिनेशन वेडिंग परफॉर्म कर रहे हैं. बट वी वांट, जिसमें मैं चाह रहा हूँ, मैं अपने दूसरे स्टार्टअप्स को भी मशवरा दे रहा हूँ कि दे शुड कम इनटू प्ले
and whatever support they need, Shahruh is there to support them and to empower them. Whatever they need, we are there to help them. So they should work on bringing people in Pakistan. पाकिस्तान से तो लोग बाहर जा रहे हैं, ओके फाइन, ये एक फैक्टर तो हो गया, बाहर के लोगों को पाकिस्तान में आना चाहिए. दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर. And for this thing, we are recently started working with few corporates here in Pakistan. Shahruh never wanted to get incubated or accelerated or all those things. We bootstrapped our venture, and we are very much happy about that. Alhamdulillah, we have done really satisfactory things by doing bootstrap. But अब हम कुछ corporates के साथ collaborate कर रहे हैं. We are signing MOUs with them just because के जो बाकी के startups अभी हमारे आ रहे हैं, इनके लिए एक रास्ता हमवार हो जाए. Not for Shahruh Technologies itself, no. Shahruh Technologies itself के लिए नहीं, इन लोगों के लिए. तो इसमें we are gonna start working with IBA Karachi. IBA Karachi के साथ we are in conversation, और they have a huge fund for startups and they are onboarding almost 180 startups. तो we are in conversation with them कि आपने जो 180 startups लेने हैं, इसमें से एक छोटी सी slot आप हमें भी दे दें, उसकी जितनी भी वैल्यूएशन है, उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो हम डिसाइड करेंगे, और उन स्टार्टअप्स को हम ऑनबोर्ड करेंगे. होंगे वो आपके पैनल पे ही, काम आप ही करेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर आपको पता खुद तो काम करता नहीं है ना. तो फ्रेंकली स्पीकिंग तो खुद तो हमने नहीं करना, हम उनको सेलेक्ट करेंगे, हम उनको ट्रेन करेंगे, एम्पावर करेंगे, उनको पॉलिसी के लिए एजुकेट करेंगे, सारी चीजें बताएंगे, जो उनको चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, and then they will be doing all those things. So first thing is IBA Karachi, we are in conversation with them, और हमारी conversation आप कहने के बस बिल्कुल MOU के करीब है, बस just the MOU need to get signed. Then we are in conversation with Sara Technologies. Sara, no doubt, Pakistan's largest IT company. Leading, leading IT company. So yeah, we are in conversation with them, or we are going to sign an MOU with them, inshallah, very soon, just for the same thing. As you know, there's Netsol have an incubator, in-house incubator. They call it Inspire. So yeah, they are onboarding almost 10 startups in Inspire, 8th cohort. So we at Shahruh, we are working with them, closely working with them, कि आप इसमें ये करें कि इस डोमेन के स्टार्टअप्स को भी लें और उनको हमारे साथ कनेक्ट करें. We will be there in cohort. हम स्टार्टअप्स के साथ बिल्कुल मिलके उनके लेवल पे जाके काम करेंगे. हमें एकदम से ना मेंटोर बनने का और उस्ताद बनने का कोई शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, शौक ही नहीं है. ना ही हमारी अभी उम्रें इस तरह की हैं कि हमें देख के फीलिंग आए कि हम मेंटोर हैं और हम उस्ताद हैं, और ना ही हमें शौक है. दोनों चीजें नहीं है, लगता भी नहीं है और हमें शौक भी नहीं है. तो हम उनके बिल्कुल साथ मिलके बिल्कुल बराबरी के लेवल पे, इक्वालिटी लेवल पे काम करेंगे, लेकिन obviously they will be learning a lot from Shahruh experience. So that's how we go with Netsol, और IBA का मैंने आपको बता ही दिया. Definitely, I think these are really nice, and hats off to you about actually taking those initiatives. So if we have startups actually listening to our conversation right now, so how can they get in touch with you or Shahruh about any support? Maybe they have an idea, they want to pursue this, or they have an idea that is very much focused on sharing economy model that you guys have been following. So how can they get in touch with you? Okay, so primarily we receive queries from our website. It's www.shahruh.com, SHAHRUH. तो मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूँ कि it's not Shahruh, it's Shahruh. Shahruh is a Turkish term that means someone who create impact. तो आप बस अब गूगल पे जाके शाहरुख ना लिखिएगा, बस शाहरुख लिखिएगा तो you will eventually land on website. तो website पे obviously you can get my email, you can get my LinkedIn profile, you can get Facebook things, not only mine but of whole team. So you can connect with us. We are very open people. हम बिल्कुल अच्छा लगता है हमें लोगों के साथ मिलके बात करके. And we are one of few peoples के जो बड़े आराम से अपना WhatsApp नंबर भी शेयर कर देते हैं. If you are doing good, we are really welcoming people. आप आएं, आप बात करें, आप अपना आइडिया डिस्कस करें. We can do that. The primary point of contact is obviously website. So if you want to directly email me, so it's hamid.saeed, hamid.saeed@shahruh.com. So you can email me anytime.
Great. So, Thank you. Yes, thank you. Thank you so much, Hamid. And I think we will actually try to conclude our session with this whole note, because I wanted something to give until the end of this session, so that the startups can actually get in touch with you and get guidance from you. So thank you so much, Hamid, for joining us today. I'll close this session with my own closing remarks around this thing. So the inspiration actually came from that initiative by Hamid, actually recommending me to have Shahruh on board for a session. And it was very much aligned with what we have been celebrating in Global Entrepreneurship Week. And it's all about taking action. It's all about creating value and thinking about things in a structural way, so that you make an impact not for yourself, but also for the whole society. So the sharing model that Shahruh is following, that's an amazing example for future startups and people who are thinking about the product ideas that can solve problems in different sectors. These are the kind of people, and these are the kind of inspiration that you should be looking out for. Thank you so much, Hamid, for joining in. We'll be concluding this session. Thank you so much. I wish it all was the all best mine. to Shahruh for their Thank you future. very much. And we are expecting great things from you in future. And all the best. Take care. Inshallah. Allah Hafiz. Okay, take care. Allah Hafiz. Thank you very much for having me Right. today. Allah.